बंद कर लो, सोचो कि ये बजट नहीं, ये राष्ट्र तुम्हारे लिए लाया एक बेहतरीन तोहफा है। ये बजट अमृत काल ये बजट आपको बताएगा कि आप कितने बेहतरीन राम राज ये बजट आपको रोजगार जैसे शब्दों से दूर ले जाएगा, आप जन्नत की सैर करेंगे। ये बजट ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक बजट है। सुने सुनाए शब्द लग रहे हैं। एक पल के लिए तो मैं भी हिप्नोटाइज हो गई थी। यही तो किया जा रहा है, बड़े बड़े नाम आपके सामने रख दिए जाते हैं बिल्कुल अमृत काल में। पिछली बार एक नामकरण किया गया, उस नामकरण में कुछ लक्ष्य तय किए गए, वो लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं हुए उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। एक नया नाम फिर आ जाएगा, उसके तहत 10,000 लक्ष्य आपके सामने रख दिए जाएंगे, फिर वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे अगले साल आप फिर भूल जाएंगे क्योंकि एक नया नाम आ चुका होगा। और ये सिलसिला इसी तरह हर साल दर साल आपके सामने चलता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आप सोचा अरे वाह गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, देखो कितना बढ़िया नाम है, ये तो अमृत काल है। भले ही आप विष पी रहे हैं पर उसको भी अमृत काल बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी जबरदस्त मशीनरी है आपके सामने। अब दिक्कत यहां ये आ रही है कि बड़े से बड़े अर्थशास्त्री, कृषि शास्त्री, सब लोग ढूंढ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आखिर क्या है इसमें, क्या बोले। मतलब हालत तो बेचारे गोदी चैनलों की भी हो गई है, वो तक नहीं बता पा रहे हैं। इतनी कोशिश कर ली, वो तक भी बहुत ज्यादा फायदे से गिना नहीं पा रहे। अब आप सोचिए अगर Welcome to the Amrit Kaal. This budget, Amrit Kaal, 25 years. So pretty presumptuous of this government, right? That it's going to last 25 years. The issue is they can't deliver in 2 months, 4 months, 6 months. They never tell you any truth because there are no comparisons. They don't give you figures against what they budgeted earlier. So it's like a dream world, a dream world. Anybody who buys it, right? Power to them. Just like this, PM, digital will revolutionize fintech, create opportunities. Pray, how will fintech ever create opportunities for the poor, the people who are really unemployment and need? You ask him that, right? Just like smart cities. Any smart city? Just like the Ganges being clean. Anywhere clearer to be clean? Okay. Rise in capex will create jobs, bring in more investment, says PM, and what he's done is he's increased his spend on capex, but he's reduced the outlay on roads. So basically, he's just juggling, right? Budget for a modern, self-reliant nation, says PM. Yeah, self-reliant on Gaumutra, just like what is he given to the agriculturists? Drones that will spray Gaumutra. Guys, get that. President debate, BJP fields UP MPs because opposition attacks government on jobs and inflation. Insignificant MPs from UP. Amrit Kaal kicks off with Capex Mahotsav. Wow, man. Oh, really? Grow GDP, grow. That's all. If that doesn't happen, we are toast. And if it does happen, the grow GDP is all about these big 5-6 guys driving driving growth and hence cornering all the money. Welcome to Modi States Capitalism 2.0. FM's booster shot. RX Capex. Sitaraman votes for growth, shuns pre-poll populist moves. Budget FY23 to change scale of India's economy. Right? It hasn't happened for 7 years. Do I expect that to happen now? Your guess is as good as mine. I might as well be living in la la land. A balanced budget for the times. Well, what else are you going to say? Gati Shakti. Expect infra to gain speed. Well, railways is always an economic multiplier. If they get it right, it might happen. But knowing them, it won't happen. Rail logistics to enter speed track. Wow. Hey, good one, folks. Great lollipops all over the place. But here this guy who's coming up next, he nails him in I've just taken a clip of 1 minute. He nails them. Cheers. Coming out of pandemic today, India's health expenditure as a percentage of GDP, unlike possibly any other civilized country that I know, is lower than it was before the pandemic. And that has enabled you to increase capital expenditure. But has it enabled you to add to total investment by increasing public capital expenditure? No. Because private capital expenditure, private investment has collapsed. So all you have done is fill that hole that Ambani and Adani have vacated. And you have done it by spending less on Narega, less on health, and by failing, despite record profits by listed companies, to raise taxes, and by miserably failing to do disinvestment. My third message is the government has understood the extent of its incompetence. Therefore, next year's budget, disinvestment targets are very modest. They are lower than the actual collections this year.
Tax revenue targets are very modest. This government has given up on the idea that you will collect more and spend it on public goods and on welfare. Those are the three messages from this exasperating budget for me. Finally, they clearly have no medium-term plan. Till 2 years ago, they used to give you a medium-term framework telling you at least it was not worth the paper it was written on. At least they gave you some kind of astrology on where they thought the economy would be in 3 or 4 years. They've abandoned that. And then the FM has the insouciance to say that this budget is a 25-year blueprint. When you can't even tell me where the economy is going to be 4 years from now, what the growth rate is going to be, what the fiscal deficit is going to be. Right. Dr. Roy, thank you so much. There's a lot of hand clapping about that. This is not a populist budget. Anita Sitaraman has finally given us proper facts and figures. Hey, what was she doing for the last few years, right? Selling us lollipops? Folks, it is political because either this government's given up on 2022 or is to show that it'll win it all, or it's only about 2024. And he needs to get the economy going if he wants to stand a chance in 2024. And so as TK Arun right, but the budget versus political. The budget is indeed innately political, only not focused on the proximate assembly election. For Modi, UP elections matter, but not as much as the general elections 24. It is imperative for the BJP success in the round that economy should get back to robust health at least a year prior to that. The economy is not receptive to the terms of rustic phrases that flip a switch, unleashing a torrent of sectarian passion the way the polity has been. That's true. In the year prior to the pandemic, economic growth had weakened to 3.7% according to the latest official estimates, and Modi was responsible for it because of demonetization. The budget gambles that the pandemic will retreat in the next couple of months and that large-scale state funding will strengthen recovery. I doubt that. There's so much corruption. Why would a government that is so tech-savvy not give up the long gestating optical fiber network spanning 250,000 villages? Because they could have done it with satellites, but why? Cable has to be laid in trenches, which have to be dug, for which contracts have to be given. The digging can be inaugurated in thousands of villages. People can realize the politician is at work, bringing development. Contractors, diggers, cable haulers all make money, feel the reality of Vikas. This is politics in command, not penny pinching economy. Absolutely true, folks, but till it gets us seeing all the different yojanas of this government. Nothing really is worked. There are no implementers. And hear what this guy is saying. He's nailed it. And the reality, folks, is this guy is not worried about employment. And why is he not worried about employment? That's where the dubious design. Because if everybody is employed, who's going to be his karyakarta? Hear this again, folks. Only the unemployed guy is going to be your karyakarta and work at the booth level. If he has money, if he has a job, he ain't going to do it. So maybe this is by design, folks. Let's just say this. This is by design. He wants to make everybody a beggar and a slave to handouts by the government, and all they'll do is just spread the cheer by keeping their karyakartas at work. No real employment. Maybe that's what it's all about, folks. Cheers. नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संघ फिर एक बड़ी बैठक करने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दत्तात्रेय होसबोले जी भी रहेंगे मीटिंग में, और संघ की बड़ी मीटिंग बीजेपी के साथ इस मायने में महत्वपूर्ण है कि संघ समझना चाहता है कि विधानसभा चुनाव में उसके सामने क्या चुनौती हैं, क्या परेशानी है, विपक्ष की क्या रणनीति है और उसका क्या काट है। दरअसल पिछले दिनों में जो कवायद हुई है, जो चर्चाएं हुई हैं दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर, संघ उससे बहुत परेशान था। ये लंबे समय के बाद हुआ है कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच इतनी तनाव की चर्चाएं आम हो गई हों। एक बार पहले भी हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने तो अटल बिहारी वाजपेयी पे तरह तरह के आरोप लगा दिए थे, ये तक कह दिया था नशे में रहते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसी जब चर्चाएं होती हैं तो बहुत खराब संदेश आता है। बनारस में प्रधानमंत्री जी आए थे 2 दिन पहले और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की इतनी तारीफें कर दी कि वो ओवरडोज हो गया। मतलब हमेशा होता है कि छोटा नेता बड़े नेता की तारीफ करता है कि वो तो इतने महान हैं, वो तो इतने आदर्श हैं, लेकिन उल्टा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने योगी जी की बहुत तारीफ कर दी तो लोग बोले यार इतनी तारीफ की भी क्या जरूरत थी। मतलब सच तो सबको ही पता है ना, कोरोना में अब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कोरोना में सबसे अच्छा काम हुआ है। अब मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि पूरे देश में सबसे खराब काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ था कि नदियों के किनारे लाशें बहती हुई नजर आ रही हों। सरकार इतना झूठ पूरे देश में कहीं बोली होगी मुझे नजर नहीं आता जितना उत्तर प्रदेश में बोली थी।
लोग मर रहे थे, परेशान थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, और सरकार की नहीं, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है। तो संघ ने चित्रकूट में की बैठक में इन बातों को विचार किया। संघ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा विस्तार कर सकता है संघ, और हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। संघ की चिंता यह भी थी कि जिस तरह राम मंदिर को लेके विवाद हुआ है जमीनों को लेके, और खास तौर से जिस तरह चंपत राय जैसी पर्सनालिटी एकदम विवादों के घेरे में आ गई है। अयोध्या में जो जमीनें खरीदी गई उसमें चंपत राय का नाम जिस तरह सामने उछला, फिर बिजनौर की एक गौशाला जमीन के मामले में जिस तरह उछला, फिर एक फैजाबाद में, अयोध्या में फिर एक जमीन को लेके मुकदमा कायम हो गया। तो चंपत राय की छवि ऐसी बन गई कि वो अयोध्या के जो मेयर हैं और जो अनिल मिश्रा है, इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि एक्सपर्टीज है ही नहीं, और इस सरकार में सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और या एक मोटा मोटी आउटलाइन उनका रहता है और उसके अंदर काम करना होता है, वैसे चल रहा है। तो जो उन्होंने कहा वैसे चला, और उसी से कनेक्टेड है कि दूसरी बात ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ये मान रहे हो कि हम जैसे चल रहे हैं वो ठीक है, और हम जो परिणाम चाहते हैं वो मिल रहा है। भाई बहुत क्लियर सी बात है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर यही चाहते हैं और यही करना चाहते हैं, उनको यही चाहिए था, तो उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं और हम ठीक चल रहे हैं, और उसको वो एडवर्टीजमेंट से या प्रचार से मैनेज करते हैं। आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर बजट को डिफेंड करने या बजट के बारे में बताने आए, और कहा यह गया है कि कल वो 11 बजे में होगा। हम लोग समझते हैं कि नौकरी देने से वोट मिलेगा। अगर उनकी प्लानिंग में ये है कि नौकरी करने लगेंगे तो सब काबिल हो जाएंगे और फिर सब अपने अपने में मस्त हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो वैसे सोच रहे हो। ये बीजेपी का बहुत जो बहुत नेटवर्क है, महत्वपूर्ण बात मुझे जी कह रहे हैं, बीजेपी बहुत का जो इम्पोर्टेंट बात। नेटवर्क है बूथ लेवल तक, वो बिना बेरोजगारी के हो ही नहीं सकता है। हम आप घर से निकलेंगे किसी काम के लिए, पैसे देने पे नहीं निकलेंगे। तो जब तक बेरोजगारी नहीं होगी और जब तक बूथ पे बैठने से नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं होगी, तब तक कोई बूथ पे नहीं जाएगा किसी कीमत पे। तो अगर इनकी प्लानिंग में ये चीज है कि लोग बेरोजगार रहेंगे, तो हमारे पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होगा और वही काम करेगा। उसको हम आयुष्मान जैसी योजना से कमाने की व्यवस्था कर देंगे कि पड़ोसी बीमार है तो उसका इलाज भी करा दो, उसका क्रेडिट भी ले लो और कुछ बच भी जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिससे कार्यकर्ताओं के कमाने बचाने की व्यवस्था होती है। वो गौ रक्षकों को पीट देना, उनसे वसूल लेना वगैरह, ऐसी तमाम चीजें। मुझे लगता है कि रोजगार दिलाना उनकी योजना में है ही नहीं। वो चाहते ही हैं ऐसे ही कि ऐसे ही कार्यकर्ता बने जो इस तरह से कमाते रहे और पार्टी के लिए काम करते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का नेटवर्क, उसके वर्कर्स का नेटवर्क किसी भी पार्टी से बहुत अच्छा। So now fast and furious, what are the other items that caught my eye? Akhilesh Jayant raised BJP's negative politics to woo voters. Farmer youth and the state have been completely ignored. SP pits Anupriya's sister against Deputy CM Maurya. Maurya is in trouble. Minister versus a boy for Karhal, choice is easy. Even among non-Yadavs, and despite appeal of PM ration scheme, SP chiefs stand tall. Temple coming up, but Ayodhya not a cakewalk for Saffron Party. Priyanka slams Sitaraman for UP type remark. Can you imagine how the people of UP were insulted? The English press is not saying it, but everybody I'm hearing on the Hindi press is just nailing Sitaraman. Okay. Akhilesh said, rivers of blood will flow over Article 370 revocation, not a stone thrown, says Shah. Well, mafia rule will return with SP regime, says Shah. They got nothing else. And what does this pipsqueak Anurag Thakur say? Anurag Thakur slams Jayant over remark on Hema Malini. Rajnath woos farmers in politically sensitive Lakhimpur Kheri district. Government distorting idea of India, says Rahul. And it was a very, very strong speech. In fact, I've heard some people say, I'm not sure why I called him Pappu. This is another game changer. Congress manifesto promises 40% women quota in Uttarakhand police force. For the fight now, Congress needs people with guts, ideology and stamina. Absolutely. So RPN, obviously your history. Nation is at risk from outside and inside. Rahul Gandhi in Lok Sabha, it absolutely is. Weakened foundations brought Pakistan, China together. Rahul accuses the government, nail the government on China, man. Don't let it off. Don't take your pedal off the accelerator. RS disallows Pegasus-related amendments to President address. Hey, what else can they do? Galwan hurt. PLA officer is torchbearer at Winter Olympics. They are fingering us, but PLA losses higher than it's admitted. Let's see what's that. Let the government of India own up to it. All marriages can't be labeled violent, says Irani. Irani is part of the Manuwadi clan. Judiciary and EC being captured, Rahul said in Lok Sabha, and hallelujah to that. And somebody ought to nail them. Jai Hind.